Okay, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 8 of data mining. So we have with this lecture, after this lecture, we will be completing 4 weeks into this semester. Uh, so in the last lecture, we had we basically discussed the Apriori algorithm, which is a scalable algorithm for finding frequent item sets from transactional databases. Apriori was proposed way back in 1993, and it was the first major algorithm proposed for the problem of frequent pattern mining, first major efficient algorithm for frequent pattern mining. So today we'll continue this discussion of frequent pattern mining. We will discuss some extensions to the a priori algorithm. We will also discuss a couple of other concepts, the idea of closed patterns and the idea of max patterns. And then after that, we'll start discussing another scalable algorithm, which is called the frequent pattern growth algorithm, FP growth. So the FP growth algorithm was proposed in around 2000, and this is even better than the a priori algorithm. So that is basically the agenda for today. So are there any questions? All right, no questions. So we were discussing the a priori algorithm. So this is a scalable algorithm for finding frequent item sets from transactional databases. We discussed some of its characteristics last time. So this is a breadth first algorithm. It it's level by level, uh, level by level. uh, You can say processing of the item set lattice. It is also known as candidate generation and test algorithm. It generates some candidates that are potentially frequent and then tests them. And in general, the test involves two things. It checks for whether the subsets of that generated candidate exists in the previous frequent item sets or not. If it does not, it is pruned. That's one check. Otherwise, it will scan the database and count the number of times that particular item set appeared in the database. If its count is less than the minimum support count, it is then pruned again. So in this way, you will be able to generate all frequent item sets from a transactional database, starting from frequent one item sets. So we denoted the set of all frequent one item sets as F1, or sometimes we also, so you can use the term F1 or L1, both of them are used in the book. So L1 is the set of all frequent one item sets. So L2 until whatever your maximum K is, the length of the longest frequent item set that you have found in your database. Mhm. All right. Uh, I think we had discussed the entire algorithm last time. If there are any questions, we can do them again here. Otherwise, I will just move forward. So uh, there are at least two major issues with this algorithm, and then we will discuss some extensions for alleviating those issues. So one issue is multiple scans of the DB. So remember, whenever you generate a candidate set of item sets, you will have to count those item sets in your transactional database. So usually transactional databases are very large. So they reside on the secondary storage, on the hard disk or whatever your secondary storage is. So you will have to scan that database to count the occurrence of each item set. And you will have to do this for, let's say, C1, which is a candidate one item set, C2, which is a candidate two item set, C3, and so on. And each of those scans, as I said, could be quite
computationally expensive, which is because it's scanning a huge database which may potentially contain millions of transactions. So that is one major issue. The other issue is basically tedious counting of item sets. Uh, why this is a separate issue? Because for each item set, you have to read the transaction and then check whether that item set appears in that transaction. And if it does, then you increment this counter. And at any point in time, you'll probably be maintaining lots of counters because the number of candidates may be very large. So So you will have lots of counters that you're maintaining, and for each counter, you will have to check within each transaction whether it appears. If it does, then you increment it, otherwise you don't. So these are the two major issues, and now we will discuss some ideas that have been proposed in the literature to kind of alleviate these problems. The first approach is basically partitioned a priori. So in this case, if you do the partition properly, you will need only 2 scans of the DB. Remember, in the original a priori algorithm, you will need k plus 1 or k scans of the DB to generate frequent item sets of length k. While in this case, if you partition properly, which we'll discuss shortly, the maximum number of scans is fixed and equal to 2. Okay? So let's discuss the idea. So, so we are given one parameter in a priori algorithm, user specified parameter, which is the minimum sub, min sub. So this is usually expressed as a percentage. So, right. So for example, min sub is, let's say 1%. So if if an item set appears greater than or equal to 1% in the transactional database, it is called frequent. Okay. So this is expressed as a percentage. Remember that. So the idea is that let's say you have a transactional database. Let me call it D. This is a full transactional database. So where you have n transactions. So what we do is we partition this database into multiple smaller databases. And this partition is meaning that there is no overlap, so exclusive partitioning. So let's say n, let's say just to take an example is 100. So you create, let's say 5 partitions, D1, okay, D2, D3, D4, and D5. So each of them would have N1, N5. All of them would have what would be the size of transactions? 20, right? So you partition the database into 20. Now the idea is that you partition each of these D1, D2, Dn, D5. They should be such that they should fit in main memory. So we can reduce the partition size by creating more partitions, right? So, so that is in our control. Yes, you have a question? यस सर सॉरी आपकी आवाज बीच में कट गई थी. व्हाट इज मिन्स अप? कैन यू एक्सप्लेन Minimum अगेन? support. We discussed this last time. ओके, और इसका रेलेवेंस क्या है यहाँ पे? So minimum support is the minimum support that an item set must have in a database for it to be frequent. So this is part of the basic definition for frequent item set mining. So if you think ओ, of an item set, uh, let's say AB एक item set है. If AB appears more than 1% of the time in a database, then it will be frequent. I mean, greater ओके. than or equal to 1% of the time, that it will be frequent.
ठीक है, Okay, got it. ट्रांजैक्शनल Thank you. ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में आप काउंट करेंगे. सो 1% ऑफ 100 इज व्हाट? 1% of 100 is one transaction, right? Which is actually too small. मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको मैं 5 कर लेता हूँ. ठीक है. सो फॉर दिस एग्जांपल दैट वी हैव, सो आपके पास 5 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर आइटम सेट फॉर इट टू बी फ्रीक्वेंट एज ए मिनिमम. ठीक है. अब आपने इसको पार्टीशन कर लिया, D1 D2 D3. D1 D2 D3 D4, ईच ऑफ देम हैज 20 ट्रांजैक्शंस. तो हर एक के अंदर लेट्स से कोई आप फ्रीक्वेंट ढूंढना चाहें, तो using the same formula, तो 5% of 20 is what? So one item set. So if any item set appears at least once in D1, it is frequent in that partition, right? According to the definition of minimum support. So I mentioned that D1 size should be such that it should fit in memory. So if it fits in memory, you can load D1 entirely into memory and find all the frequent item sets in D1. ठीक है. Similarly, so you don't need to do multiple scans. एक scan किया D1 का, वो सारे frequent item set D1 में ढूंढ लिए using 5%, whatever your minimum support is. ठीक है. Then you load D2, find all frequent patterns. D3, find all frequent patterns. D4, find all frequent. D5, find all frequent patterns. Now, so far you have done only one scan of the full database D, because एक load किया, सारे patterns ढूंढ लिए. Now the question is कि let's say आपके पास L D1 is the set of all frequent patterns in D1. So if you have found an item set that is frequent in D1, would it be frequent in the whole database D? D1 में frequent होने के लिए कितना चाहिए? One transaction चाहिए, right? But whole database में कितनी चाहिए थी? 5 transactions for whole D, right? So इसमें से मिल गया, तो potentially it may not be frequent in the whole database. ठीक है. Let's say D1 में आपको 5 मिल गए तो फिर तो होगा, but एक मिला तो फिर नहीं होगा, right? ठीक है. So let's say we Sir, why not uh, frequent? so this is the अगर set of D1 all. जी. सर अगर D1 के अंदर वन ट्रांजैक्शन है तो फिर तो फ्रीक्वेंट हुआ ना, बिकॉज हाँ, D1 का D1 के अंदर 5%. फ्रीक्वेंट है, बट हमारी टास्क ये है कि हमने ढूंढना है D के अंदर फ्रीक्वेंट. हमने पार्टीशन कर लिया हुआ था. ओके ओके ओके. बट अल्टीमेट गोल वही है कि D के अंदर ढूंढना है फ्रीक्वेंट. अभी हमने सिर्फ D1 के अंदर फ्रीक्वेंट ढूंढा, जिसमें वो सारी आइटम सेट्स होंगी जो एक या एक से ज्यादा आ रही हैं. ठीक है. सो सो okay, let's devise some scenarios. So let's say if an item set is not frequent in any partition, right? Would it be frequent in D? Let's say D1 में भी frequent नहीं है, D2 में भी नहीं है, D3 में भी नहीं है, D4 में भी, D5 में भी नहीं है. इसका मतलब है कि D1 में भी 1 नहीं था, D2 में भी 1 नहीं था, D3 में भी नहीं था, D4 में भी नहीं था. इसका मतलब फॉर श्योर वो टोटल 5 से तो कम ही होगा. ठीक है. सो द आंसर इज नो. ठीक है. ये तो फॉर श्योर है. तो कोई आइटम सेट जो पांचों में नहीं है, जितनी भी पार्टीशन में फ्रीक्वेंट नहीं है, इट इज नेवर बी गोइंग टू बी फ्रीक्वेंट इन द फुल डेटाबेस. ठीक है. नाउ लेट्स डू द अदर थिंग. if if an item set is is frequent in all partitions, would it be frequent in D? So if an item set is frequent in all partitions, would it be frequent in D?
वन में लेट्स से फ्रीक्वेंट है, इसका मतलब है कि वन और वन से ज़्यादा आ रहा है, टू में फ्रीक्वेंट वन वन से ज़्यादा आ रहा है, थ्री में भी है, फोर में भी है, फाइव में भी है। तो टोटल आप सम करेंगे डेफिनेटली फाइव या फाइव से ज़्यादा होगा। सो दिस इज यस। ठीक है। सो व्हाट अबाउट इफ एन item set is frequent in some partitions but not all, would it be in D? इसमें लेट्स से D1 में वो 10 दफ़ा आ रहा है, जस्ट टेकिंग एग्जांपल। सो इन दिस केस सर D1 में ही फ्रीक्वेंट है, D2 में नहीं है, D3 में, D4 में, D5 में नहीं है। सो इन दिस केस इट इज़ फ्रीक्वेंट इन D। बट एक और सिनेरियो हो सकता है कि D1 में सिर्फ वन आ रहा है और D3 में भी वन आ रहा है, और D2, D4 और D5 में आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये टू बन रहा है, तो नेवर फ्रीक्वेंट। सो दिस इज ओनली पॉसिबल पोटेंशियल। तो फिर हमने इसमें क्या करना है? सो वंस वी हैव डन वन स्कैन एंड फाउंड ऑल द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन D1, D2, D3, D4। ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी फाइंड द कैंडिडेट आइटम सेट्स इन D as the union I of frequent item sets in DI। मतलब उनका आप यूनियन ले लें। इफ समथिंग इज फ्रीक्वेंट इन D1, ठीक है, तो it will be in this, it will be a candidate for the whole database. If it is frequent in all, of course it's frequent, but still हम उसको एक candidate generate कर लिए D में, because हमने एक final counting करनी है। ठीक है। So now you use this C, this is candidate for the entire D. Scan D again to count each item set in C of D in D. So this is now the second scan, and then you are done. इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से आइटम सेट्स हैं, फ्रीक्वेंट हैं, कौन से नहीं है, जिन और उनकी एग्जैक्ट काउंट भी मिल जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द पार्टीशनड a priori. So you partition the algorithms, or you partition the data set such that each partition fits in memory. Then you process or you find all the frequent item sets in that in that partition. By the way, you can do this in a distributed fashion also. So you process or find all the frequent item sets in each partition. Then you collect all the frequent item sets in all the partitions and take the union. This would become the candidate for the whole database. Now you scan the whole database again and count each of those candidates and then check against the minimum support. If its minimum support is greater, you get the final frequent item sets. So this is the partitioned approach, which reduces the number of scans of the database. And it can also be applied in a distributed or parallel fashion. So any question here? Right. Let's look at another sampled a priori. Okay. So in the previous case, we did a partitioning, which is the whole database, but then divided into multiple smaller databases. So now we sample the database. We have a database D. Okay. So take a sample S of D. So usually sampling is done using some randomized approach. We have discussed sampling before as well. You can use simple random sampling with or without replacement. You can use without replacement, that is generally better. Okay. With replacement, that is generally better. Okay. But you can use both usually because transactional databases are very large. uh, by the way, there is one caveat here. So
if you sample without replacement, or if you sample with replacement, there is a potential that one transaction may be uh, sampled multiple times, and this potential would increase your database size is small. And remember that in frequent pattern mining, our ultimate goal is counting. So if you have samples that are selected multiple times, that is kind of undesirable because it will increase the counts. So in this case, I would say that you should do sampling without replacement. Okay? Okay? So now this is a sample. It's not the full database. So so size of S would generally be less than size of D, right? So now, and ideally, its size is small so that you can do multiple scans easily, either in memory or out of memory. It depends on the size. Then find all frequent item sets in S. Okay? So once you have found all those frequent item sets in S, so let's say, let me call that L of S. Okay? So now this becomes the candidate for D. Now you scan the whole database D and find their actual counts. Okay? So do you get this point? But there is one other issue that you need to be aware of. So this is would not give you the exact uh, set of frequent item sets. So this is an approximate algorithm. The partition a priori that we discussed earlier gave you the same answer if you ran the algorithm on the full database. In this case, in sampled a priori, the results that you would get would not be the same in the sense that some item sets may be missing. Okay? Some item sets may be missing in the possible set of frequent item sets. So in that sense, we say that this is not exact, it's approximate, not exact. Okay? But of course, this is a quick way to estimate uh, the frequent item sets in a large database by taking a sample of the database. Okay? Of course, the whole theory applies. If the sample is larger, you'll get better estimates. If the sample is smaller, you get lower estimates. So this is up to the user to decide. If you take a larger sample, of course, it will take more time. If you take a smaller sample, you can do it quickly. तो ये ट्रेड ऑफ्स अवेलेबल हैं इस होते हैं इस केस में. Sir, I have a question. ठीक है. So is this question, this approach fine, clear? So sampled, it is not Uh, exact. It will depend on the size of the sample, and it is preferable. It is a desirable approach, especially when you want to get some quick results and you don't care about whether the results are accurate or not. Okay? sir, sir, in sample priori, Yeah, after जी finding all the frequent sets in sample S, जी जी. सर तो उसके बाद हम क्या करेंगे? आप can you kindly repeat this? मतलब पूरे जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है डेटाबेस डी का, उस पे हम सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट ढूंढेंगे. उस सेट को हम एल कह रहे हैं. ठीक है. सो एल इज द सेट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन एस, जो भी आपको मिनिमम सपोर्ट दी हुई है. एस के अंदर ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं. एस के लिए ये एग्जैक्ट है,
बट डी के लिए एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इज दिस क्लियर? यस सर, थैंक यू। All right. So now let's look at another uh, approach that is used, which is basically hash based a priori. ठीक है? So this technique actually kind of handles the issue of large amounts of candidates that are typically generated in the a priori algorithms. And the largest usually is C2 and C3. Why are these largest? Because these are small item sets, two of size 2 or size 3, and usually we have not, and they would typically occur quite frequently, and they will be usually greater than your minimum support. So pruning का इफेक्ट अभी नहीं आया होगा। जब C बड़ा होता जाएगा, pruning का इफेक्ट आता जाएगा, तो साइज छोटा होता जाएगा। So usually C2, C3 tends to be very large. So and of course you start with C1, which is after the first scan. So instead uh, so so from C1 you generate F1, scan करने के बाद आपके पास frequent one item sets आ गए। So then of course, as we mentioned last time, you do F1 self join F2 to generate your C2, right? अब ये जो C2 है, as I said, it can be lots of item sets here. इस C2 को मैनेज करने के लिए, या जब भी कोई कैंडिडेट आप जनरेट कर रहे हैं, कैंडिडेट सेट जनरेट कर रहे हैं, उसको आप हैश टेबल में साथ ही डालते जाएं और काउंट करते जाएं। सो जस्ट अ क्विक एग्जांपल, ऑल्दो उसमें निटी ग्रिटी डिटेल्स कुछ और भी हैं, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से आपके पास वन आइटम सेट्स ए है, बी है और सी है, और लेट्स से डी भी कर लेता मैं। दिस इज वन आइटम सेट्स एंड दीज आर ऑल फ्रीक्वेंट। सो फ्रॉम हेयर यू कैन जनरेट फॉर एग्जांपल ए बी। ठीक है, आप ए सी भी जनरेट कर सकते हैं और ए डी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास बी सी है, फिर बी डी है, और फिर सी डी है। तो ये सारे आपके कैंडिडेट टू आइटम सेट्स हैं। ठीक है, सो आप जैसे ये जनरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल पहला वाला ए बी जनरेट करेंगे, तो इसको आप किसी हैश टेबल में ऐड कर दें। सो यू कैन क्रिएट ए हैश table or hash list, you can say, with a fixed number of bins or hashes. You can, let's say, okay, of course the number of bins would depend on the your size of the data. For this example, you can take a small number like, let's say, 7, or let me not go into that. So let me just mention कि आपने कोई hash function define करना है। hash a b करेंगे तो it will tell you which bin to insert this item set। ठीक है, तो hash function कोई है आपके पास hash। ठीक है ना, यू हैव स्टडीड हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स आई बिलीव। तो वहाँ आपको पता है, यू हैव टू डिवाइस a हैश फंक्शन दैट वुड evenly distribute your items in multiple bins। ठीक है, सो आपके पास कोई हैश फंक्शन है, ए बी को आपने हैश किया, लेट्स से इट गोज इनटू बिन 1, लेट्स से बिन 1 में चले गया। ठीक है, और मे बी लेट्स से सी डी को भी हैश किया, हैश सी डी, तो ये भी बिन 1 हो गया। इस तरह आपके पास मल्टीपल आइटम्स एक बिन में आते जाएंगे। जो मल्टीपल आइटम्स आ रहे हैं उस बिन का एक काउंटर मेंटेन करें, नॉट फॉर द ईच आइटम सेट इन द बिन, एक बिन का काउंटर मेंटेन करें एंड इंक्रीमेंट दैट, कि कितनी दफा उसको आपने देखा है। सो एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर यू हैव डन द हैशिंग एंड द काउंटिंग, you will have various bins। let's say bin 1 है, bin 1 इसका कोई काउंट लेट्स से 2 आ गया। सो bin 2 इसका काउंट लेट्स से 0 है। bin 3 इसका काउंट लेट्स से 5 है। bin 6 4 इसका काउंट लेट्स से 1 है। एंड बिन लेट्स से 5 तक एग्जांपल लेता हूँ, इसका बिन 4 है। सो लेट्स से आवर मिनिमम सपोर्ट
ये काउंट ले रहा हूं मैं, अब काउंट इज लेट से 2, ठीक है ना, 2। अब इफ यू लुक एट द बिन्स, सो बिन 1 का काउंट, तो बिन 2 का काउंट 0 है और बिन 4 का काउंट 1 है। बोथ ऑफ दीज काउंट्स आर लेस देन 2। सो इसका मतलब है कि बिन 2 के अंदर बेशक 1 आइटम सेट हो या 10 हो या 100 हो, उन सारों का काउंट 0 है, और बिन 4 में भी सारों का काउंट 1 है। इसका मतलब उसके अंदर जितने भी आइटम सेट है सारे ही इनफ्रीक्वेंट है। सो यू कैन ड्रॉप द एंटायर बिन, ठीक है। एक तो आप स्पेस सेव कर रहे हैं बाय सेविंग मल्टीपल आइटम सेट्स इन वन बिन एंड मेंटेनिंग अ काउंटर फॉर द बिन। और दूसरा ये है कि जब पूरे बिन का काउंट भी मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम हो रहा है, तो वो पूरा बिन ही आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो सो दिस इज बेसिकली मेन आइडिया बिहाइंड द हैशिंग बेस्ड ए प्रायरी। इसमें थोड़े से और छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, बट वो पूरा पेपर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट एटलीस्ट फॉर दिस कोर्स। तो ये आइडिया समझ आ गया। So in other words, just to summarize, whenever you're generating candidates at any level, let's say C2 or C3 or C4, you hash them at the same time, meaning that you insert them in bins. और जब भी आप इंसर्ट करते हैं, एक बिन का काउंटर है, नॉट ईच आइटम का सेट का काउंटर, वो आप इंक्रीमेंट करते जाएं। जब बाद में जब सब कुछ हो जाएगा, आप देखेंगे कि कुछ बिन्स होंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत छोटी मैंने साइज दिया है, 5 बिन्स, मे बी यू विल हैव टू मेक dozens of bins. You will find that there are some bins that have a count that is less than the minimum support count. तो जब पूरे बिन का काउंट लेस है, तो इसका मतलब उसमें सारे आइटम्स डेफिनेटली आर नेवर गोइंग टू बी फ्रीक्वेंट, तो पूरा बिन आप डिलीट कर सकते हैं। ये पूछें क्वेश्चन। सर बिन वन का काउंट 2 है, तो ये लेसर देन 2 तो नहीं है, वुड इट बी ड्रॉप्ड और नॉट? कौन सा बिन? बिन वन का काउंट 2 है ना, तो इट इज इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट काउंट, तो वुड इट ड्रॉप्ड मिनिमम और नॉट? जनरली जो हम जो कन्वेंशन लेते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट काउंट होती है, इक्वल और ग्रेटर को हम कंसिडर करते हैं ओके। लेस होता है फिर ओके नहीं करते। ओके, ओके, तो सो इन दिस ठीक है, केस ओनली बिन 2 would be dropped and bin 4. ये 2 ड्रॉप नहीं होगा, बिन 2 और बिन 4 ड्रॉप होगा, ओके। ठीक है। ठीक है, सो दिस वाज द हैशिंग अप्रोच एंड वन फाइनल अप्रोच which has dynamic DIC. This is the actual name, जो पिछले वालों का मैंने एक्चुअल नेम नहीं यूज किया, आई यूज ए मोर इंट्यूटिव नेम। इसका मुझे इंट्यूटिव नेम अभी समझ नहीं आ रहा, सो आई एम यूजिंग देयर ओरिजिनल नेम ए प्रायरी, ठीक है। तो इसमें आइडिया क्या है, इसमें जो इन दिस आइडिया, इन दिस एल्गोरिथम modified version of a priori, we try to avoid multiple scans of individual transactions, ठीक है। मतलब आइटम सेट काउंटिंग को हम, उसका जो टीडीएस टास्क है आइटम सेट काउंटिंग का, उसको स्लाइटली इम्प्रूव कर रहे हैं। आइडिया क्या है? अगेन ए वेरी सिंपल आइडिया। सो लेट्स से एक ट्रांजैक्शन की मैं बात करता हूँ, लेट्स से T1, लेट्स से TI कर लेते हैं, ठीक है। TI, और लेट्स में इसमें ट्रांजैक्शन मैं को लिख लेता हूँ, लेट्स से BCDNF, ठीक। सो दिस इज a transaction in the database. Let's say you have let's say C4, उसमें C4 में एक आइटम सेट है, let's say ABC, ठीक है। So if you scan the database, is ABC a subset of this transaction?
ABC इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है ABC का काउंट इसमें 0 है, राइट? तो जब आप इसका कोई भी सुपर सेट बनाएंगे, लेट्स से इसका कभी C5 बनता है, लेट्स से ABC और F आ गया, would you scan this transaction again or not? Would you find this to be a subset of this transaction or not? It will not be there because जब इसका छोटा भी उसमें नहीं था, इसका बड़ा तो definitely नहीं होगा. So this is the essential idea that is used here, meaning that for each item, uh, in other words, for each transaction, we maintain a bit for each item set. ठीक है? जैसे ही वो item set उस ट्रांजैक्शन में नहीं मिलता तो उसका बिट हम सेट कर देते हैं, मीनिंग दैट कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसका सुपर सेट स्कैन कर लेंगे, वो ट्रांजैक्शन हम स्कैन करें ही ना, स्किप कर दें उसको, बिकॉज उसमें से तो हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है? So do you get this idea? So let's say again taking another example of let's say one item sets. Let's say मुझे पता है कि B is so तो कैंडिडेट B की मैं बात करता हूँ। ठीक है? So if you have a transaction let's say T1, उसमें A B C है let's say, और एक T2 है और इसमें आते हैं लेट्स से C D E है। सो जब आपने कैंडिडेट बी काउंट करना है, आप T1 खोलेंगे, उसमें देखेंगे बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें आ रहा है तो ठीक है, तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं आपने किया, मतलब काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। T2 T2 खोला है तो उसमें बी नहीं आ रहा, इसका मतलब है बी इसमें नहीं है। सो इन द नेक्स्ट पास ओवर द डेटाबेस, जब बी का कोई आपके पास सुपर सेट बन गया होगा BC, तो आप T2 को स्कैन करेंगे ही नहीं, बिकॉज T2 में आपको मिलेगा ही नहीं इसका कोई सबसेट इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है? पहले ही आपको पता चल गया इसका नहीं है, तो यू विल स्किप सम स्कैन। सो एज यू इंक्रीज, एज योर आइटम सेट इंक्रीज, यू विल बी स्किपिंग मोर ट्रांजैक्शन इन योर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। सो एसेंशियली ये जो एल्गोरिथम है, इट मेंटेन्स ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ विच ट्रांजैक्शन कंटेन्स एन आइटम सेट और नॉट, और उसको फिर इंटेलिजेंटली यूज करता है टू reduce the computational cost of item set counting. ठीक है? Any question with this? All right. Okay. No questions. Okay. So now, so let's talk about a couple of other concepts before moving on to the next algorithm. Uh, so the number of frequent item sets that your algorithm would generate given a transactional database would depend on your threshold, on your minimum support threshold would determine the number of frequent item sets found in a given D. ठीक है ना? ठीक है? So if let me take two numbers, let's say minimum support में एक database मेरे पास है और मैं min sub 1 एक मेरे पास है 5%,
और min सब 2 जो है मेरे पास 10% है। तो किस पैरामीटर से ज़्यादा फ्रीक्वेंट पैटर्न मिलेंगे? जिसका मिनिमम सपोर्ट ज़्यादा है कि कम है? जिसका कम है, बिकॉज जो ट्रांजैक्शंस कम, जो आइटम सेट कम ट्रांजैक्शन में भी आ रही हैं वो भी फ्रीक्वेंट कहलाई जाएंगी। ठीक है। सो इन प्रैक्टिस यू कैन a lot of item sets can be generated। ठीक है। सो लॉट का मतलब ये है कि लॉट्स एंड लॉट्स, यू कैन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स भी जनरेट हो सकती हैं if your if your minimum support threshold is relatively small। So processing all of those item sets might be difficult. Even you might not be able to interpret all of them, because eventually humans have to look at those item sets and see whether they are useful for their particular business or not. Okay. So sometimes we will reduce this overload by defining smaller subsets of interesting patterns. So those smaller subsets are called what is known as, the two concepts that are commonly used: closed item sets, and the other is max or maximal item sets. So remember, previously हम सिर्फ frequent item sets की बात कर रहे थे, which is the set of all item sets that are frequent. So now we have introduced two additional sets. One is called closed item sets and the other is max item sets. So let's look at their definition and see के उनका क्या फायदा है। So let's first talk about closed. So an item set X is closed if it is frequent, meaning that it has to be frequent by itself. It's part of the frequent item set, but it has some additional condition. And there exists no super set of X with the same frequency slash support. ठीक है? So X is closed if it is frequent, and there are no super patterns or super sets of X that have the same support. So for example, let's say X तो मैंने एज ए सेट लिया, let's say मैं अब ABC पे जाता हूँ, let's say आपके पास ABC एक आइटम सेट है, इसकी काउंट let's say 5 है and it is frequent। ठीक है, it is frequent। So let's say मेरे पास एक सुपर सेट इसका मिलता है ABCD, उसके let's say सपोर्ट काउंट let's say 3 है। ठीक है। सो इसका मतलब है ABC आपके पास एक आइटम सेट है, उसका सुपर सेट है जिसका सपोर्ट काउंट लेस देन ABC है। सो इसका मतलब है कि ABC इज ए क्लोज पैटर्न। सो इफ यू हैड अनदर सिनेरियो, ये 5 होता, कोर्स 5 से ज्यादा हो नहीं सकता, बिकॉज वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर एज वेल, द ए प्रायोरी प्रिंसिपल। लेट्स से ये 5 होता, तो देन ABC वुड नॉट हैव बीन ए क्लोज पैटर्न। फिर हम ABCD को देखते, whether it was a close pattern or not। ठीक है। सो अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल अभी आगे भी डिस्कस करूंगा। लेट मी गिव द डेफिनेशन ऑफ द नेक्स्ट मैक्स पैटर्न और आइटम सेट। सो इन दिस केस मैक्स आइटम सेट X इज फ्रीक्वेंट, मुझे तो वही चीज है जो क्लोज में भी था। अब दूसरी कंडीशन ये है, एंड देयर एग्जिस्ट नो ठीक है, नो फ्रीक्वेंट सुपर सेट ऑफ X। ठीक है।
ठीक है। सो डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, उधर काउंट की बात हो रही है, इधर सिंपली फ्रीक्वेंट की हो रही है। सो इन द प्रीवियस एग्जांपल दैट आई गिव, ए बी सी की काउंट 5 है एंड इट इज फ्रीक्वेंट, और मैंने कहा ए बी सी डी इसके काउंट 3 है, और लेट्स से ये भी फ्रीक्वेंट है, ठीक है। सो देन ए बी सी would not be a max pattern, but it would still be a closed pattern. समझ आई बात? So in other words, max pattern is a more restrictive condition than closed pattern. So let's say L is the set of all frequent item sets, ठीक है, in a database D मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, ये L is the set of all frequent item sets, और फिर C is the set of all closed item sets, and M is the set of all max patterns for any given data set. So इन तीनों में आपका एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है? सबसे छोटा सेट M है, वो रिस्ट्रिक्टिव, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। सो दिस वुड बी इन जनरल ए सबसेट और इक्वल टू L, which is sorry C closed pattern. This would in general be a subset or equal to of F, ठीक है। ओके, अब इसका फायदा क्या है? सो कोर्स one so one thing which will actually not prove is that C is a lossless compression of F, मीनिंग दैट आपके पास किसी भी डेटाबेस का डी सी है तो उससे आप सारे एफ जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एम के साथ नहीं है, एम ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, उसके नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स सी का साइज छोटा है, so you can look at it and get a idea of all the important item sets in a smaller set. F of course is much larger. F मैं L कभी यूज करता हूँ, कभी F करता हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट ए क्विक एग्जांपल, ये स्लाइड्स में भी दी हुई है। सो लेट्स से वी हैव वेरी स्मॉल ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, और उसके जो आइटम्स हैं, मैं I1 से I50 है, ये पहली ट्रांजैक्शन है, मतलब यू हैव आइटम्स फ्रॉम I1 I2 I3 I4 I5, 50 का ट्रांजैक्शन है साइज, और दूसरा है I1 टू I100, इसमें 100 आइटम्स है। तो दिस इज माय ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, लेट्स से मिनिमम काउंट इज 1, ठीक है। तो इसमें क्लोज पैटर्न्स कौन से हैं? इस स्मॉल डेटाबेस में सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस हैं। सो लेट्स से I1 I2 इज दिस क्लोज्ड? इसका काउंट क्या है? दो दफा आ रहा है ना, राइट? इज देयर ए सुपर पैटर्न ऑफ दिस विद द सेम काउंट? यस, बिकॉज I2 I3 sorry I2 इसका काउंट भी 2 है, राइट? इसी तरह I2 I3 I4 I5 उसका काउंट भी 2 है, इसका मतलब है कि I1 I2 इज नॉट ए क्लोज पैटर्न। तो इसमें क्लोज पैटर्न कौन सा होगा? I1 टू I50 पूरा, उसका काउंट 2 है। I1 टू I50 से थोड़ा सा बड़ा करें आप, I51 डाल दें, उसका काउंट 1 हो जाता है। तो हमारे पास पे जो क्लोज पैटर्न क्या हुए? I1 टू I50, दिस इज वन क्लोज पैटर्न,
इसका काउंट ऑफ कोर्स 2 है, और दूसरा क्लोज पैटर्न I1 to I100, इसका काउंट 1 है, दोनों फ्रीक्वेंट है। रिमेंबर पहली कंडीशन ये है कि दे हैव टू बी फ्रीक्वेंट। I1 to I100 का भी कोई सुपरसेट नहीं है दैट हैज ए काउंट इक्वल टू दिस। ठीक है, सो दो क्लोज पैटर्न्स निकले। व्हाट अबाउट मैक्स पैटर्न्स? सो I1 to I50 फ्रीक्वेंट है, उसका सुपरसेट I1 to I52 53 54 वो भी फ्रीक्वेंट है। सो इसका मतलब I1 to I50 इज नॉट मैक्स। सिमिलरली I1 to I75 लें, वो फ्रीक्वेंट है, I1 to 180 वो भी फ्रीक्वेंट है। तो इसका मतलब वो भी मैक्स नहीं है। तो मैक्स हमारे पास सिर्फ एक रह जाता है, वो I1 to I100, जस्ट वन मैक्स पैटर्न। ठीक है, and so the max pattern is smaller than the number of max patterns is smaller than the number of closed patterns। और जो क्लोज पैटर्न्स हैं दो थे, उसमें से आप एक्चुअली बाकी पैटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। I1 to I50 से I1 भी जनरेट कर सकते हैं, I2 भी कर सकते हैं, I3 भी कर सकते हैं, एंड I1 I2 इकट्ठा भी कर सकते हैं, I1 I5 भी इकट्ठा कर सकते हैं, so on। So that's why this was called a lossless compression of the frequent item sets, but max वाले से नहीं कर सकते। All right, any questions? Mhm. Okay, so in the last lecture towards the end I also introduced the notion of association rules, so quickly मैं फिर remind करवा देता हूँ। ठीक है, from frequent patterns you can generate strong rules। ठीक है, so a rule, let's say A B, ये एक rule है which means that in an item set uh, basically B, what is the probability you can say, or the condition that you see B in a transaction given that you have seen A। इसका जो मेजर यूज होता है वो कॉन्फिडेंस कहते हैं हम। So confidence is defined in this way: support of the full item set AB divided by the support of the left hand side। ठीक है, ठीक है, तो support of the full item set divided by support of the left hand side। अब let's say, let me just take some numbers, let's say AB, let's say 10 है, और A let's say मैं कहता हूँ 15 है, और B let's say मैं कहता हूँ 20 है। ठीक है, so what would be the confidence? Confidence would be, by the way, support जो है ना, it is generally a fraction, उसको fraction से ही लिखना चाहिए, although in this case जो constant term n कट जाएगी। ठीक है, तो क्या कॉन्फिडेंस बना? 10 डिवाइड बाय n ऑफ कोर्स, लेफ्ट हैंड डिनोमिनेटर में हमारे पास a है, a का काउंट मैंने क्या लिखा था? 15, 15 स्लैश n, n ऑफ कोर्स कट जाएगा। ठीक है, विच मीन्स दैट 10 डिवाइड बाय 15, ये आपके पास, विच इज ऑफ कोर्स 66.7%। So there is a 66% chance that if you see A, you'll also see B। So इसमें इस तरह के scenarios हो सकते हैं: if A was milk, then bread। So if someone buys milk, then there is 66% chance that he's going to buy bread। So if confidence is greater than minimum confidence, another user specified threshold, then rule is strong।
सो रिमेंबर आइटम सेट के लिए जो हम कंडीशन लगा रहे थे, आइटम सेट इज फ्रीक्वेंट। रूल के लिए हम कह रहे हैं रूल इज स्ट्रांग। आइटम सेट इज फ्रीक्वेंट व्हेन इट इज सपोर्ट इज ग्रेटर देन मिनिमम सपोर्ट। रूल इज स्ट्रांग व्हेन इज कॉन्फिडेंस ग्रेटर देन मिनिमम कॉन्फिडेंस। ठीक है। बाय द वे आपका दूसरा रूल भी बन सकता है, बी गिवन ए। इसका कॉन्फिडेंस क्या होगा? कॉन्फिडेंस ऑफ बी ए, दिस वुड बी, ऊपर तो ए बी होगा वही 10, नीचे डिवाइड बाय 20 है, which is 50%. So this rule has lower confidence than the first rule. So if our minimum support threshold was 60%, minimum confidence threshold was 60%, तो ये strong नहीं कहलाएगा, so पहला वाला strong कहलाएगा। ठीक है। So rules give us useful information, just as I gave the example of milk given bread. So you can decide on, or you can cross price various items. If you know that someone who buys a particular product would also buy another product with a high confidence, तो आप दोनों को इकट्ठा बेच सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं, या आप एक पे सेल लगा सकते हैं, दूसरे पे नहीं लगा सकते, तो यू नो दैट ही इज गोइंग टू बाय दैट इन एनी केस। ठीक है। तो इस तरह के आप डिसीजंस यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सर, बी और ए की एसोसिएशन में व्हाट इज द मिनिमम कॉन्फिडेंस? दिस विल एक्चुअली बी डोमेन डिपेंडेंट, बट जनरली 50% से ज़्यादा ही हम कॉन्फिडेंस लेंगे, 60-70 टिपिकली होता है। ओके 50 से कम के तो तुक नहीं बनती, तो आई वुड से अबाउट 66-75% आर द यूजुअल कॉन्फिडेंस, बिकॉज बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इम्प्लीकेशन दोनों तरफ जा सकती है। तो वी विल सर, इसमें आइडियली लाइक 50% है implications that ये। goes strongly to one side. हम्म। ओके। तो आई वुड से कि 75-80 टिपिकली ये होते हैं प्रैक्टिस में। ओके, थैंक यू। All right. So now let's time हमारा 15 मिनट है। Let me discuss another algorithm. So ये थोड़ा सा हमने लेस डिटेल में डिस्कस करना है, तो होपफुली ये 15 मिनट में हो जाएगा, अगला वाला ज़्यादा डिटेल में। सो दिस इज इसका एक जो एल्गोरिथम का नाम है एक्लैक्ट, स्टैंड्स फॉर समथिंग विच आई डोंट रिमेंबर एंड देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दैट इन एनी केस। बट इसका जो जेनरिक नेम ये है कि आइटम सेट माइनिंग यूजिंग वर्टिकल डेटा फॉर्मेट। ठीक है। सो वन typical algorithm in this is called ECLAT, eclat। ठीक है। तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आइडिया बताएंगे। ठीक है। सो व्हाट इज ए वर्टिकल डेटा फॉर्मेट? सो फार यू हैव सीन ए ट्रांजैक्शनल डेटाबेस ऑफ दिस फॉर्म। आपके पास रोज ट्रांजैक्शंस थी, और हर ट्रांजैक्शंस में आपके पास आइटम्स थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल, ए बी सी, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। लेट्स से मैं इसको आईडी भी दे देता हूँ 1। ठीक है। सो 2, लेट्स से बी सी। 3, लेट्स से ए सी। और लेट्स से 4, लेट्स से just C। ठीक है। So this is our transactional database. So we can convert this transactional database to a vertical format, somewhat like आप transpose कर रहे हैं इसको, although it's not like metric transpose, but intuitively यही होता है कि आपके पास आप item sets columns बन जाते हैं,
और रोज आपके आइटम्स बन जाते हैं और कॉलम्स आपके ट्रांजैक्शन आईडीज बन जाते हैं। ठीक है। सो आपके पास जो कॉलम्स बनेंगे, आप ये पहला एक कॉलम है 1, आईडी 1 2 3 एंड 4, और फिर आपके पास जो रोज होंगी, आपके आइटम सिंगल आइटम्स इन दिस केस, ऑल्दो आइटम सेट्स भी हो सकते हैं, B C। ठीक है, ये नहीं थे ना हमारे। एंड देन यू बेसिकली नाउ राइट in which transactions a particular item set appeared or not. So that would be the set of interest. So A 1 में भी आ रहा है, 3 में आ रहा है, बस ठीक है। So A का जो सेट बनेगा वो 1 और 3। ऊपर मैंने कॉलम्स लिखे हुए, कॉलम्स में आप डाल सकते हैं, आप डालना चाहें, बट आई रिटन द कंप्लीट सेट हियर। ठीक है। ट्रांजैक्शन का जो सेट बन रहा है अब, दिस इज बाय द वे कॉल्ड ट्रांजैक्शन सेट, नॉट आइटम सेट, इज 1 and 3। सो व्हाट अबाउट बी? बी आपके पास 1 में भी आ रहा है, बी शायद 2 में भी आ रहा है मेरे ख्याल से, और B3 में भी आ रहा है। ठीक है। Sir, B is not included in 3, 3 only में in नहीं 1 लिखा। and 2. ठीक है। ठीक है। इसी तरह सी, सी आपका 1 में आ रहा है, सी मेरे ख्याल से 3 में भी आ रहा था और 4 में भी आ रहा था। ठीक। तो ये आपके पास ये वर्टिकल फॉर्मेट है। So this is the now if you have converted your transactional database into the vertical format, you can do the apply the a priori algorithm or any other algorithm for that matter by slightly different processes. So क्या slightly different processes होंगे? So if you want to count the number of times that you have seen A, what is the count of A? So count of A, it's simply uh, जो था ऊपर 1 और 3, which is of course 2. ठीक है। So you count the number of transactions in the transaction set for A. ठीक है ना? Similarly for B, similarly for C and similarly for D. So let's say मैं ये जो transaction sets हैं, इसको मैं T कह देता हूँ। So let's say transaction set for A is T A, so T B और T C। ठीक है। तो मेरे पास T A जो होगा वो क्या था, 1 और 3 था, right? So what if you, let's say if you want to find uh, the count of AB, so what you do is you can basically take uh, the count of A intersect transaction of B, right? इस तरह कर सकते हैं ना। ए बी किन ट्रांजैक्शंस में आ रहा है, वो ट्रांजैक्शन सेट ए इंटरसेक्शन ट्रांजैक्शन सेट बी करेंगे तो आपको मिल जाएंगी वो ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों ए और बी आ रहे हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स उसका काउंट ले लें, दिस विल बी द काउंट ऑफ ए बी। यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है ना। तो इस ए का 1 3 था, बी का 1 2 था, तो ए बी सिर्फ 1 में आ रहा है इकट्ठा, उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 का काउंट 1 है, मतलब उस सेट का काउंट 1 है। ठीक है।
सिमिलरली लेट्स से आपने कोई बड़ा आइटम सेट को बड़े का लेना, लेट्स से आपके पास ए बी का टी ए बी है आपके पास, और लेट्स से आपके पास है टी हैव टू बी लेट्स से डी सी कर लेता हूँ, डी ई, ठीक है। सो इफ यू वांट टू find the count of A, B, D, E, you basically take the transaction of AB intersect with transaction DE. ठीक है, ठीक है आपको इसका, so most of the processing can be done in this way. Of course, vertical data format में जो algorithm का दूसरा process है, let's say you are using a priori, you will be doing breadth first. First, you will be generating ones, single item sets. Then from single, you will be generating candidate two item sets. So candidate टू से आप frequent टू आइटम सेट करेंगे, frequent टू से candidate थ्री, एंड सो ऑन। वो प्रोसेस वही रहेगा, बट जो काउंटिंग है और जो बाकी काम है वो आप वर्टिकल फॉर्मेट में करेंगे, नॉट ऑन द ओरिजिनल ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। और वो इस तरह के ऑपरेशन से हो जाएंगे यूजिंग सेट ऑपरेशंस। इसमें ऑफ कोर्स टेक्निक्स में और भी कुछ ट्रिक्स हैं, एज अ सेड इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने बस यहीं तक देखना है कि what is the vertical data format and how you can use it to generate higher item sets. And of course, you can use this in the context of a priori. But a priori में जब आप काउंटिंग कर रहे हैं, आप इस तरीके से काउंटिंग करेंगे using the vertical data format, not the original data format. चलिए ठीक है, any questions? So I think that is at the end of today's lecture. In the next lecture, we'll be starting FP growth algorithm, which is the next major algorithm. Uh, so we will discuss that, and then we will discuss interesting measures for item set mining in more detail. Okay. Of course, I think in the next lecture we have a scheduled uh, quiz as well. Any questions? Sir, will we have a quiz next week as well? जी जी, ट्यूसडे को होगा इंशाल्लाह क्विज। So at least couple of weeks तो हम रखेंगे ये रूटीन ट्यूसडेज वाली। Okay. Anything else? हमने अपना मिड टर्म की डेट डिसाइड करनी है। वो प्लीज थिंक ओवर इट एंड मे बी विल यूज ए पोल टू आस्क यू। सो जनरली सेवन्थ या एट वीक इन क्लास होगी। हमारा क्लासरूम बड़ा है तो हम क्लास में कर सकेंगे। बट उसमें एक इशू है, हमारे पास टाइम से क्लासरूम का 1 आवर 15 है। 2 घंटे का मैं करना चाहूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है। सो इट हैज़ टू बी आउट ऑफ क्लास देन, विल सी। ठीक है।